Hello, palaces and iconic bridges well today. I want to share with you added depth an incredible experience making us appreciate the rich history of the sunset cruise along the Bosphorus Strait. And it was an unforgettable journey filled with stunning views, seeing the magnificent architecture from a unique perspective. So let me take you through my adventure to come alive. As we boarded our boat at the pier, the excitement was palpable. We passed the sun was setting behind us, ornate mountains casting a warm glow over the water. We were all eager to embark on this journey. Our guide to witness the magic of Istanbul from about the significance of these structures. As we set sail, their role in shaping the gentle breeze against our faces. As we sailed, our guide began sharing stories about the landmarks just along the Bosphorus Strait. We saw stunning waterfront historical sites, luxurious yachts, and picturesque parks along the coastline. It was like witnessing a living painting unfold before our eyes. But it wasn't just about the sights. Our guide also shared insights into the daily lives of the people who call Istanbul their home. He spoke about local customs, traditions, and the vibrant culture that thrives within these bustling streets. His stories painted vivid pictures in my mind, making me feel as if I were part of the city itself. And then came the moment everyone had been waiting for, the breathtaking sunset over the Bosphorus. The sky turned shades of orange, pink, and purple, creating a magical scene. Everyone on board paused to take it all in, capturing memories that would last a lifetime. I found myself lost in thought, reflecting on how fortunate I am to witness such beauty firsthand. After soaking in the golden hour, we headed towards the Asian side of Istanbul. The journey continued smoothly, and we passed by more iconic landmarks, each offering its own unique charm. From ancient mosques to modern skyscrapers, every corner held something special to discover. One thing that struck me during this cruise was the sheer diversity of Istanbul. The city is a melting pot of cultures, each contributing its own flavor and richness to the urban tapestry. From the bustling markets filled with spices and textiles to the serene gardens nestled amidst modern buildings, Istanbul offers something for everyone. And as our cruise came to an end, it felt like saying goodbye to a friend. We disembarked at the Asian side, our hearts filled with gratitude for the memories made during this journey. As I walked away from the pier, the city lights began to twinkle in the distance, creating a magical atmosphere. It was a perfect ending to a day well spent. So if you ever find yourself in Istanbul, make sure to take a sunset cruise along the Bosphorus Strait. It's not just a tour, it's an experience that will stay with you long after your trip ends. Thank you so much for joining me today on this incredible adventure. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the notification bell so you don't miss out on future travel stories. Your support means the world to me and helps me continue sharing these experiences with all of you. Until next time, keep exploring, keep dreaming, and never stop chasing those moments that make life extraordinary. Take care and see you soon. Bye-bye. Hey there, fellow travelers. Welcome back to my channel. Today I have got something truly special lined up just for you. Get ready as we dive into the heart of Turkey's vibrant capital, Istanbul. This dynamic metropolis is where East meets West in perfect harmony, offering a unique blend of ancient history. It was not only a house of Ottoman Empire, but also administration and educational center too. During the Ottoman Empire, there was a big university in Topkapı Palace, and many Ottoman sultans, they received their education in that palace. Palaces consist of four parts. The most important part is common section, private building, family. Our Prophet Hazreti Muhammad is here. His sword, also his jacket, is kept in Topkapı Palace. Interesting fact, last year 5 million people visited that palace. Also, palace is included UNESCO World Heritage List. Now it is Museum Turkish Lira.
location. This is the Galata Port. Galata Port, Istanbul Cruise Terminal area. It is not only a port, it is an area where we can find lots of luxury seaside restaurants, cafes and cafeterias, local and world famous brands, Turkish and international cuisines, traditional street food. As you can see, that port has more than 1 kilometer coastline road, where you can enjoy the Bosphorus and taking amazing photos. Enter. Because right now we are between two continents. Finally, we are in the Bosphorus Channel. This is the channels that divided Istanbul into two continents. Istanbul is only city in the world sitting on two different continents. As you can see, the left side of the boat or back of the boat, this is completely European continent, European side. Right side of the boat, this is the Asian continent, Asian side. Right now, we are between Europe and Asia. At the same time, you can see both continents. This is the channel that we are to चले भाई ये जो है ना यूरोपियन साइड है यहाँ से और ये जो है ना एशियन साइड है तो ये आप इस वक्त जो है ना दोनों कॉन्टिनेंट के दरमियान है С вами находимся на वही बात जो Босфорском उसने इंग्लिश में कही है проливе. रशियन Как में мы कही знаем, Стамбул является уникальным городом с уникальным географическим местоположением, так как он является одним из немногих, который стоит на двух. तो इस वक्त जो हम सफ़र कर रहे हैं ये हम दो तरफ हैं आप दो बर आज़म एक साथ देख रहे हैं इस हाथ के ऊपर ये यूरोप है ये यूरोपियन साइड है ये एशिया साइड है This is the Beşiktaş Stadium. Capacity of the stadium is 42,000. ये स्टेडियम है सामने Cellular Paris ये जो आखिरी हिस्सा है इसमें शहंशाह और उसकी फैमिली रहते थे 3 हिस्सों में बटा हुआ है ये इसमें 285 रूम्स थे 68 टॉयलेट्स थे एंड blah 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 Эмоциональная часть связана с первым президентом Турции Мустафа Кемаль Ататюрком. Он прожил свои последние годы жизни. Including and working in Ankara. Ankara is the city of Turkey. Is coming to Istanbul, is living and working in that building. तैयब अर्दोगान यहाँ के रहते हैं जब वो आते हैं तो Shangri-La Hotel. This is Istanbul Naval Museum, Sea Museum. Now we are the most expensive area of Bosphorus Channel. This is Beşiktaş. सबसे एक्सपेंसिव एरिया है यहाँ का ये तकसीम सबसे एक्सपेंसिव है उसके बाद सेकंड एक्सपेंसिव एरिया ये है Важно. Район знаменит своей ночной жизнью. Если вы захотите посетить прямо здесь, слева от вас. Также район мы называем студенческим, так как множество университетов находится именно тут. Один из которых мы сейчас с вами видим, BAU. Одним из самых престижных обучения проводят исключительно на английском языке, даже не на турецком. Самый лучший турецкий город. Традиционные завтраки подают именно здесь. Также множество дорогих отелей находится именно тут. सबसे एक्सपेंसिव 5-star होटल है आप ये इनका ना It is located in the first floor on the corner. You will not believe me, but it is true. If you want to stay just one night in that palace in Sultan Suite, are you ready? You have to pay 52,000 euro for one night. एक रात के 52,000 यूरो होगा Michael Jackson, Hillary Clinton, Bill Clinton, Madonna, बिल क्लिंटन माइकल जैक्सन सब रहे हैं several times in Istanbul and stayed in that palace. ये 5-star होटल है सबसे महंगा होटल है एक रात के $50,000 हैं Вчера переводится «светящийся». И по иронии судьбы 28 лет немецкая японская компания установила уже не как
Recep Tayyip Erdogan. Height of the tower is 369 meters. If we compare with Eiffel Tower, which is located in Paris, in France, Çamlıca is higher than Eiffel Tower. Tower is Eiffel Tower से भी ऊंचा है भाई ये। 54 floors, rest of them antennas. In 48 tower, floor, there is 54. one restaurant, Michelin star. 5 stars restaurant, very expensive, without reservation you cannot go. You should book a table in advance. Michelin star is located in 48th floor. Diamond of Bosphorus Grand Mecidiye Mosque. This is only mosque in the world was designed with European architecture style. You can never see any Muslim country the mosque was designed with European style. Grand Mecidiye Mosque was built 19th century by the order of Sultan Abdul Mecid. The mosque was designed by famous architect Nikolios Balyan. नेपोलियन ने ये मॉक्स बनाई थी 19th सेंचुरी में सुल्तान अब्दुल मजीद के दौर में। Так, друзья, наконец-то мы с вами видим самую инстаграмную достопримечательность Стамбула. Если вы прогуглите Стамбул, первое, что выйдет, это мечеть слева от нас. Жемчужина Босфора Гранд Мecidiye. Мечеть была построена в 19 веке по приказу султана Абдул-Меджида. В честь его она и названа. Внутри мечети можно найти каллиграфические писты. Также мечеть находится в районе Ордакёй, и она является единственной во всем мире, которая полностью выполнена в европейском стиле и оборудована. Если вы захотите посетить Гранд Мecidiye, попробуйте множество известных турецких стритфудов, обязательно посетите район Ордакёй слева от нас. 73. This bridge is 53 years old. First name of that bridge, Bosphorus Bridge. Also the name of this channel, the name of this water, Bosphorus Channel. At 15 July 2016, about 10 years before, military coup happened in Turkey. You know what is military coup? The army, the military, they wanted to change government in Turkey. Of course they couldn't. But on that day, on 15 July 2016, military army blocked the bridge from both sides, and army attacked with people, and a lot of people, a lot of civilians died over that bridge. After that incident, the name of the bridge was changed into 15 July Bridge. It is impossible to cross the bridge by walking because only car traffic is allowed in this area in Islam. But every year, every November, there is a big competition, marathon, people run. At the time, the bridge is open for pedestrians. В 2016 году случилась некая попытка государственного переворота. В честь этих героев мост переименовали на мост мучеников 15 века. It is also new project open president of Turkey, Recep Tayyip Erdogan. At the same time, 63,000 people can pray inside. It's about 2 football stadium. Why 63? Because our Prophet Hazreti Muhammad, he passed away at the age of 63. The mosque completely designed with new technology. Even you can see elevator inside the mosque. And only mosque in Turkey designed by 2 architect women. In Turkey, first female project Çamlıca Mosque. छमुजा मॉक्स हुजूर की उम्र की मुनासबत से 63,000 लोग इसमें नमाज पढ़ सकते हैं। Можно видеть мечеть с 6 минаретами. Саллаллаху алейхи вассалам. Это самая большая мечеть тут. Является самой большой. Это Çamlıca мечеть. Мы также называем ее мечеть Эрдогана, так как она चले भाई गोइंग फॉर टी। जी जी चाय की केटल रख दी आपके सामने और बिस्किट रख दिए 15-20 किस्म के। आपको टी टाइम है ये, आप टी से एंजॉय करें।
भाई वो सैन फ्रांसिस्को में तो एक ही ब्रिज है ना, यहाँ तो पता नहीं कितने ब्रिज हैं। हम तो लंदन के ब्रिज गिनते हैं तो कोई काउंटिंग ही नहीं है ब्रिज की। तो देखो कैसे कैसे हमारे बराबर भाग रही है वाली। अब हम बिल्कुल फ्रंट डेक पे आ गए। देखिए यार बाइक से बहुत सारी तस्वीर ले लिया, फ्रंट डेक से भी कुछ तस्वीर लेनी चाहिए कि नहीं। हाँ ब्यूटीफुल। बोट जो है ना टर्न हो रही है, उसका मतलब ये सामने जो है ना आइलैंड आ गया है। इस आइलैंड पे हम जा रहे हैं ना, ये आइलैंड आ गया है बास्फोरस। अब हम इस आइलैंड पे जा रहे हैं बास्फोरस पे, और इस जजीरे पे उतर के हम अभी 1 घंटा 2 घंटे यहाँ पे 1 घंटा खाली हम घूमे फिरेंगे, और उसके बाद जो है ना फिर हम वापस चले जाएंगे। ये लीजिए पहुँच गए हम बास्फोरस जजीरे पे। बस इस जजीरे पे हम उतरने वाले हैं। यहाँ हम कोई बहुत ब्यूटीफुल शहर है यार। आई कांट एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स के अंदर में। इतना ब्यूटीफुल, इतना वसी हो रही, इतना ब्यूटीफुल। व्हाट अ नाइस सिटी, फैंटास्टिक, बिलीव। अब ये बता रही है कि 8:20 यू मस्ट बी हेयर। इफ यू आर नॉट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू गेट बैक टू द इस्तांबुल। डोंट बी लेट। 2020 नो, विल ट्राई नॉट टू लेट। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई आखिरकार हम जजीरे पे आ ही गए, और जजीरे के पास देखें सबसे अच्छे ये बात है, घुसते ही होटल है जजीरे पे। बास्फोरस ये आइलैंड आ गए हैं। So it's very, very good. Everywhere they're saying the same thing, that you have to be here in 2020. Don't be late, otherwise it's very expensive to get back to Istanbul. And this is our cruise, where we came from. एक टाइमिंग अब तक दिखता नहीं है ना, उनके क्रूज़ खाली नहीं हो गया। They are not allowed to release you. Now he will explain you where you can go and how can you come back. ये नहीं है कि सामने आपने बस पकड़ी है and you went too far away. ये लीजिए जजीरे के अंदर आ गए। ये भी पूरा एक शहर है, घूमें फिरें, खाएं पिएं, मज़े करें। ये नाम याद रखना है, इब्राहिम नरवाल। किसी और शिप में नहीं बैठ जाना। उतरते ही बड़ी ज़बरदस्त स्मेल आई है फिश एंड चिप्स की। ओहो, ऐसा लग रहा है ब्राइटन के बीच में उतर गया लंदन में। सीधी नाक में फिश एंड चिप्स की स्मेल गई है। वेयर इज़ द फिश एंड चिप्स? खाने जा रहा है भाई, जो रेस्टोरेंट में लेके जा रहा है। ओह, शॉपिंग एरिया में लेके जा रहा है। और दिस इज शॉपिंग एरिया बेसिकली। अब ये गाइड है ना, इन लोगों का कमीशन होता है शॉपिंग करवाने के लिए लेके आने का, तो ये अपनी पर्टिकुलर शॉप्स पे लेके जाएगा हमें। कोई बात नहीं।
चलो भाई, अब कुछ खाएं पिएं, पेट पूजा करें, फिर उसके बाद देखते हैं। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम बॉस्फोरस सी। बिल्कुल ऐसा टाउन है जैसे समंदर के साथ होते हैं ना, सी फ्रंट बिल्कुल साथ है। और ये टाउन है छोटा सा, इसमें बहुत नाइस ब्यूटीफुल शॉप्स हैं। वो देखिए वो ब्रिज सामने, सफाई का इतना नाम है कि एक चीज़ नहीं पड़ी रह सकती। वो एक चीज़ भी उठा के ले गया, अगर एक सिगरेट का टोटा था। चलो फिर रोड क्रॉस करो। एक तो कन्फ्यूजन इतनी होती है कि बिल्कुल इधर लेफ्ट हैंड ड्राइव है। चलो फिर शोरमा देखो इनका। और इसके साथ ही हमारा ये जज़ीरा है बॉस्फोरस का, जो आइलैंड है, इसका इख्तिताम हुआ। सो वी आर गेटिंग बैक टू द क्रूज़ एंड वी आर गोइंग बैक टू इस्तांबुल। थैंक यू वेरी मच। ये ले भाई, ये आ गया। ये हमारा जो जैसे वो है ना लाइट हाउस होता है, उस टाइप की कोई चीज़ आ गई है। यहाँ से शिपिंग होती है। वो कितना प्यारा, वो सी के साथ जो है ना पूरा बेल्ट है, वेरी ब्यूटीफुल बेल्ट। So you can see sunset. Now sun is setting. Beautiful sunset का मंजर है, it's beautiful. Sun is about to set.